Students, welcome to our online classes. We had started lesson 5 from class 8. This is chapter 5, The Revolt of 1857. In the previous classes, we already discussed about the nature of revolt, when does a revolt occur, and the causes of revolt, which included social and religious causes, political causes, immediate causes, and economic causes. So in today's module, we will discuss about the extent of the revolt and the suppression of the revolt. So let's start today's topic. The important revolution centers and their leaders. तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पे 1857 रिवॉल्ट हुआ था और उन सेंटर्स पे किसने लीड किया था. सो इन बैरकपुर मंगल पांडे, यू आर वेल नोन अबाउट दिस नेम. झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब, बरेली कुंवर बहादुर सिंह, बिहार कुंवर सिंह, कल्पी तात्या टोपे, and Delhi Bahadur Shah Jafar. So the revolt from Meerut and Delhi spread to other parts of country. It was particularly strong in the central and northern part of India. तो बेसिकली ये जो रिवॉल्ट था इसका एक्सटेंड कहाँ था? सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अभी हमने डिस्कस किया कानपुर, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद. दे वर अपराइजिंग इन अदर एरियाज टू. रिवॉल्ट इन ईच रीजन वॉज लेड बाय डिफरेंट लीडर्स. So, Rani Lakshmi Bai, the revolt from Jhansi was led by the brave Rani Lakshmi Bai. And Nana Sahib, the adopted son of last Peshwa Bajirao II, who led the mutiny at Kanpur and escaped to Nepal in the beginning of 1859. Now, Kuwar Singh in Arra, an old man in his 70s, played a leading role in this revolt. Due to his efforts, the revolt is spread to other parts of Bihar province like Ranchi and Sambhalpur. So this is all about Kunwar Singh. Now Begum Hazrat Mahal, who also escaped to Nepal, and she is leader from Lucknow. In Lucknow, Begum Hazrat Mahal led the revolt and she was assisted by Maulvi Ahmadullah Shah. So Maulvi Ahmadullah Shah, who carried on the revolt around the borders of Awadh and Rohilkhand till his death, from his base on the Jamuna at Kalpi, reached Gwalior in June 1858 and crossed the Narmada in October, and was captured and put to death in 1859. All these leaders no doubt were affected by the policies of the British in the last 100 years, had a genuine grievance against the British. So in some places in the northern parts, India where no uprising occurred and unrest prevailed, and even civilians joined the sepoys, and they helped the rebels by giving them food and shelter. So this is how this extent of revolt expand. So main centers of this revolt: Meerut, Delhi, Kanpur, Awadh, Jhansi and Calcutta. These are the main centers of this revolt. Now, suppression of the revolt. The revolt saw strong unity among Hindus and Muslims. They fought like brothers, and the British tried to divide them on communal lines. But these attempts are foiled, and the rebels accepted by Bahadur Shah Jafar as their king and railed around him. He became the symbol of unity in India. British army freed Delhi and the epicenter of the revolt. Bahadur Shah Jafar was tried and sent to Rangoon, and his children were killed. The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Jafar broke the backbone of the mutiny, and Lucknow was recaptured in 1858. Rani Lakshmi Bai was killed and Tatya Tope captured and hanged to death. So this is how the revolt was suppressed by British government.
नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्ट, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट जो था वो फेल हो गया था, मतलब पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. देयर वर मैनी रीजंस व्हाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड. The uprising had been planned for months, but it broke before the due date. It was not widespread. मतलब जो डेट थी वो सब तक पहुंच नहीं पाई थी. द रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टुगेदर. मतलब पूरी तरह से नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में था, साउथ एरिया में इसका कोई एक्सटेंड नहीं था, ईस्ट में भी नहीं था. There was no unity among the rebels, and the ideas of nationalism had not yet developed. There was no common ideology. क्या था कि हर पर्सन का अपना पर्सनल रीज़न हो रहा था कि वो रिवॉल्ट के अगेंस्ट जा रहे थे. जो एक कॉमन रीज़न होना चाहिए, कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए, वो नहीं डेवलप थी. It was not supported by all groups and sections of the society. Some were openly supportive of the British and against the rebels. The Rajput princes, the Sikhs, the rurals of Patiala and Nabha and Kashmir did not join the revolt. So क्या था कि कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे. देयर वॉज नो प्रॉपर आइडियोलॉजी और स्ट्रैटजी विच कुड हेल्प द रिबल्स इन अ सिस्टमैटिक अटैक. तो क्या था कि कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी और स्ट्रैटजी नहीं थी. एंड द रिबल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स थे, जबकि इंडियंस के पास ऐसा नहीं था. इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, एंड गुरखाज हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस दिस रिवॉल्ट. और गुरखाज ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, ताकि इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाए. The leadership was neither strong or nor gave direction to the rebels. Moreover, the British got timely help from the government of Britain. और क्या था कि लीडरशिप जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी और उनको डायरेक्शन देने वाला कोई स्ट्रांग लीडर नहीं था. हर जगह अपने सेपरेट लीडर्स थे. और इधर ब्रिटिशर्स को क्या था कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट थी जो उनको सपोर्ट कर रही थी. दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन. So these are the reasons for failure of this revolt. Now, what is the result of revolt? The rule of East India Company ended with Queen Victoria's proclamation of November 1 November 1858. She assumed the title of the Empress of India. So क्या हुआ था, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ख़त्म हो गई थी. The rule of East India Company was formally ended in India by an act passed by British Parliament, also known as Queen's Proclamation. एक act pass किया गया, that is known as Queen's Proclamation, in August 1858, and the rule of India was transferred to the British Crown and the Parliament to ensure a more responsible management of Indian affairs. तो क्या था, अब क्या था कि जो रूल था वो कहाँ पे चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास. और इससे पहले कहाँ पे था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. A Secretary of Indian Affairs was appointed to look after governments of India with the help of council, and he was called Viceroy. अब क्या था कि एक सेक्रेटरी था जो स्टेट इंडियन अफेयर्स को देख रहा था, और उस सेक्रेटरी को क्या बोला गया? वायसराय बोला गया. The policy of ruthless conquest and annexions of Indian territory was given up. और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था और सब्सिडरी अलायंस था, इन सारी पॉलिसीज़ को हटा दिया गया. द इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट वुड नॉट बी एनेक्स्ड एंड वर गिवन द राइट टू एडॉप्शन. और स्टेट्स को ये क्या कहते हैं, एश्योर किया गया कि अब आपकी कोई भी ज़मीन या आपका राज्य नहीं लिया जाएगा. एंड ऑल्सो उनको एडॉप्ट, मतलब ये राइट है कि वो एडॉप्ट कर सकते हैं. फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू द इंडियंस. They were also given assurance that high posts would be given to them without any discrimination. इसके अलावा क्या था कि इन लोगों को ये भी बताया गया था कि इनको हाई पोस्ट दी जाएगी. So this is all about this chapter. Thank you students. Stay home. Be safe.